Super. I have Dr. Dilip with me. Hi, Dr. Dilip. How are you? I'm fine, Prashant. How are you? Very well. Good evening, everyone. Good evening, everyone, and welcome to our weekly Know Your Pet session. We are having a good time in Pune here. The weather is really nice. We hope you're enjoying yourself too. And today we have Dr. Dilip with us. He is about 10 years plus of exemplary experience in veterinary services, and he serves here as a director of veterinary sciences at Wiggles. And Doctor, would you like to introduce yourself and a little bit about your background to our viewers? Myself, Dr. Dilip Sonune, and I'm working with vehicles since from last three plus years. Before that, I worked with the Animal Care Clinic, Banjara Hills, Hyderabad. It's super specialty hospital. I worked there for 5 years, and after that, I'm practicing my profession in Pune and enjoying right now. Super. So welcome, Doctor. So guys, today we're going to talk about something very interesting and something that all of us pet parents face. सबके घर में जिनके घर में भी pets रहते हैं, dogs हैं, especially shedding is a common thing. We all face as pet parents. And I remember growing up, I had 2 dogs in my house. और घर में 3 बार सफाई होती थी क्योंकि hair loss काफी होता था. So I think that is something that a lot of pet parents will resonate with. So we'll talk about shedding today. This is also a topic that we've heard a lot of our community members, हमारे customers ने, हमारे members ने काफी इस topic के बारे में questions पूछे हमसे. So we thought it'll be best to get Dr. Dilip and talk about it. And to everyone who's here, please feel free to ask questions. I will try and take as many questions as possible. To chat में आएंगे. So let's get started. So Dr. Dilip, let's start with the basics. Dogs में shedding होती क्यों है? Why do dogs shed? See, dog skin is every species have skin is largest organ. Okay, and they don't have a continuous hair growth like human beings. Okay, they have follicular cycle. Is first of all means they have steps to grow the hairs, and last step of the hair is shedding. Okay, means first of all hair will means it settle down. Okay, then it will grow, and then it the last phase is shedding. But there are many reasons behind it. Okay, means sometimes क्या होता है कि allergens सबसे important चीज है कि allergens, उसके बाद skin health, underlying skin disease. These are common causes for the shedding, and most important thing is shedding is very common during starting of the season. Means whenever transition of the season, shedding is the common thing. Means why? Because dog don't have sweating, means sweat glands and all. So it's a protective response from the body or from the skin to means वो prepare करते हैं खुद को. मतलब अभी विंटर सीजन है, विंटर सीजन को स्किन के लिए प्रिपेयर करने के लिए वो शेडिंग दिखती है. ओके, these are the common reasons for this shedding. So doctor, ये जो आपने common reasons बताए, these common reasons are usually is it medical or is it is it a natural thing, is it a medical thing, does it indicate कि कोई problem है? क्योंकि काफी सारे pet parents को ये लगता है कि भाई shedding ज्यादा हो रही है तो कोई problem तो नहीं है. तो या क्या? Yes. Actually, common shedding is before season. Okay, but if shedding is means shedding which is मतलब बहुत ही ज्यादा shedding है and उसके साथ itching observe कर रहे हैं, dry skin, मतलब एक normal glow and problematic skin ये समझ में आता है. Okay, so जब dogs मतलब ऐसा dry skin ही दिखते हैं, उसमें skin is health indicator. Okay, जब वो missing होता है, the reason behind it, first and foremost thing is nutrition. Then skin problem, means allergic skin reactions, and food allergy dermatitis is a common and means it's around 60% common cause in India. Okay, means nutrition plays a crucial role in the skin turgor and skin health. Got it. Okay. तो इसमें डॉक्टर जैसे आपने बोला फूड और न्यूट्रिशन प्लेज अ बिग रोल शेडिंग में. तो क्या क्या वो चीजें हैं जो कि अच्छी हैं
for dogs जिससे कि shedding normal amount हो और क्या-क्या चीजें shedding increase कर सकती हैं? कॉमन थिंग्स है जो ग्लूटेन सोर्सेस है, या फिर ब्रेड है, मतलब जो रॉन्ग प्रोटीन सोर्सेस है, टॉक्सिक थिंग्स है, ओके, मींस देयर आर मींस फ्यू एलर्जेंस लाइक wrong floor cleaner, Lysol, Dettol, and phenol. These are common means floor cleaners used by many pet parents, which can cause contact allergy dermatitis. Okay, and secondary thing is fungal infection, bacterial infection, and shedding. Then pollen grains in flowering season. Pollen grains are common cause of means skin allergies. Then wrong nutrition means multiple means different type of sources of proteins at the same time can cause protein allergy dermatitis or food allergy dermatitis, Okay. which is major problem nowadays. Okay, and these things are medical, okay, which can easily means pet parent can correct on their own, and means वो अपने पेट को हेल्दी रख सकते हैं, बट उन्होंने मतलब these are the common things which we have to concentrate on. Got it. तो फूड में बेसिकली जो भी एलर्जेंस टाइप के फूड्स हैं, ग्लूटेन हो गया या फिर कोई भी केमिकल ओरिएंटेड हैं जो घर में यूज होती हैं, उनको अवॉइड करने से शेडिंग कैन रिड्यूस बेसिकली. यस, बिकॉज क्या होता है ना प्रशांत कि देखो किसी भी स्पेसीज का मतलब कोई भी स्पेसीज ले लो, स्किन इज लार्जेस्ट ऑर्गन एंड स्किन को मेंटेन करने के लिए बॉडी का अराउंड 60 to 70% प्रोटीन यूटिलाइज होता है. Okay. तो ये बहुत जरूरी है कि आपके बॉडी में प्रोटीन सोर्स काफी प्योर फॉर्म में रहना चाहिए, अच्छा प्रोटीन सोर्स रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली स्किन मेंटेन करने के लिए वो यूज होने वाला है. ओके, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द प्रोटीन सोर्सेस ऑफ बॉडी. If protein source is pure, then skin will be good. Understood. So there are some questions coming, and I'll just take some of them. There are some questions around topics other than shedding. So guys, we will address those topics today. We'd like to focus on shedding, but we are making a note of all the questions you're sending, and in the following sessions we will address all of those topics as well. So एक shedding के बारे में डॉक्टर क्वेश्चन आया कि किस तरह के combs यूज किए जा सकते हैं to manage this shedding. ओके, मीन्स इसमें पेट पेरेंट्स ने काफी कॉन्शियस रहना चाहिए. ऐसे कोम रहने चाहिए जिसके जो नोच मतलब द पॉइंट्स, ओके, वो शार्प नहीं होने चाहिए. मतलब स्किन का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए मार्केट में काफी सारे कोम्स है, जिसका मतलब ऐसा ब्लंटेड एंड हो, ओके, जो स्किन को इंजुरी क्रिएट ना करे, ऐसे कोम यूज करने चाहिए. एंड दिन में 3 बार एक्चुअली उसकी डिसेडिंग करनी चाहिए. Okay. Morning is the best, okay, and means sometime in evening. Morning and evening de-shedding तो करनी चाहिए. Means क्या होता है कि एक हेयर फॉलिकल है, एक हेयर फॉलिकल which is primary hair, and around that means secondary hairs, okay. Then after some time क्या होता है कि वो हेयर फॉलिकल, primary hair follicle becomes dead hair, it goes off, okay, and then उसकी जगह पे खुद मतलब नए हेयर आते हैं. ये साइकिल चलता रहता है. So minimal hair shedding is always there, okay, in long coat breeds, Labradors, Golden Retrievers. So it can be easily manageable with the help of good comb. So basically दिन में at least 2 बार combing होनी चाहिए है to manage the shedding and to make sure that it doesn't create any further problems. एक interesting question आया डॉक्टर, moving away from dogs a little, and I am also a cat parent, तो मैं भी बहुत interested हूँ कि कैट्स में भी थोड़ा आप बताएंगे कि शेडिंग का क्या, कैट्स में क्या ज्यादा होती है, उसके क्या रीजंस होते हैं. लेट्स स्पेंड सम टाइम ऑन कैट्स आल्सो. यस, डोमेस्टिक शॉर्ट हेयर कैट्स में शेडिंग होती है, बट कंपैरेटिवली पर्शियन कैट्स में एंड जापानीज बॉबटेल, देन मींस मेन कून, दीज आर लॉन्ग कोट कैट ब्रीड्स, ओके, उनमें मार्क्ड हेयर शेडिंग होती है. But cats are carnivores. They used to prepare means only protein. Okay. But comparatively, cats का hair fall dogs के comparison में थोड़ा कम होता है. But definitely hair fall होता है. Got it. And they have mite means mite infestation, and demodicosis is the common problem. Okay. Got it. Shweta Shah says, can you save this live? Yes, Shweta, we'll definitely save this live and share it as well.
डॉक्टर थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। कोम्बिंग की हमने बात कर ली, शेडिंग की बात कर ली। अगर ये किसी डॉग में शेडिंग नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? अपार्ट फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन, मैनेज करने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं? See, we cannot ignore nutrition, हम्म definitely, because if you are observing too much shedding, okay, then definitely you have to rule out skin problem. हम्म Okay, in India, Malaysia fungal infection is very common. हम्म Okay, वो अंडरलाइन है, लेकिन वो हम कभी मतलब देख नहीं पाते. Okay, it's very minute red colored discoloration in the skin, which is typical indication of fungal infection. Then हम्म food allergy dermatitis. ओके Okay, and skin health, vitamin D production. The skin plays a major role in vitamin D production. Okay, so nutrition पहले करेक्ट करना चाहिए. Means change complete protein sources, carbohydrate sources, and fat sources, and then you start good good quality omega 3, 6, and 9 supplement. Means there are many supplements available in the market. You can start and you can, because dogs के body में मतलब canines cannot produce some essential amino acids, so we have to provide them externally. So we can do omega 3, 6, and 9 fatty acid from outside, and we can try to reduce the hair fall. Got it. So omega 3, 6 and 9 are key ingredients. अगर dogs में Yeah. थोड़ा सा कंट्रोल करना है तो that nutrient is important for us to give externally in the diet. Yes, and definitely keen observation also important, like in which season your dog is shedding a lot, because seasonal allergy also common in some breeds. Correct. We'll come to that. That is actually in my list of questions, seasonality. पर उससे पहले एक क्वेश्चन आया था अभी एन का कि कोकोनट ऑयल क्या शेडिंग में हेल्प करता है? Yes, coconut oil shedding में help करता है. Okay. And because coconut oil consists of means few omega fat essential amino acids, and it would be great if you add the coconut oil with the food. It helps to maintain skin turgor, skin health, and it can reduce means hair fall. Virgin coconut oil is better. Virgin coconut oil. Okay, so there you have your answer, and virgin coconut oil is good for helping dogs who shed a lot. डॉक्टर थोड़ा वेदर के बारे में बात करते हैं. अभी मॉनसून स्टार्ट होने वाला है. आपने पहले ही बोला कि ट्रांजिशन टाइम में जब एक मौसम से दूसरे मौसम में चेंज हो रहा होता है, दैट इज शेडिंग इंक्रीज होती है. बट अदरवाइज इज देयर अ स्पेसिफिक सीजन जहां शेडिंग ज्यादा होती है? समर्स में, विंटर्स में, मॉनसून्स में? यस, समर के इनिशियल स्टेज में शेडिंग ज्यादा होती है, बिकॉज डॉग्स का जो स्किन है वो मतलब प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स देता है क्लाइमेट को, एंड अपना जो स्किन लेयर है वो थीन करता है. तो उस टाइम पे आप शेडिंग ज्यादा मतलब ऑब्जर्व करोगे, एंड डेफिनेटली इन स्टार्ट ऑफ मींस मानसून सीजन. ओके, मींस दिस सीजन इज आल्सो bad for the dogs, okay, because skin become moist, okay, and skin dry होने के भी चांसेस होते हैं. तो बॉडी को सीबम ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है. उस टाइम पे डेड हेयर फॉलिकल बहुत ज्यादा मतलब शेड होते हैं, and comparatively winter season is good where skin is healthy, okay, and sometime if any dog is deficient in some nutrients like biotin and zinc, okay, then only you can see you'll see a marked amount of hair fall. But monsoon season and start of the summer is Usually bad. I observed a lot of hair fall. Got it. तो अभी जैसे अब मॉनसून आ रहा है, सो मॉनसून में जनरली और भी स्किन कंडीशंस, इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. हवा में मॉइस्चर रहता है. सो कैन यू शेड सम लाइट ऑन दैट कि किस तरह की प्रॉब्लम्स अलोंग विद शेडिंग मॉनसून में कॉमन होती हैं? मॉनसून में मतलब पेट्स मॉइस्ट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, एंड जहाँ पे मॉइस्ट हो गए वहाँ वेरी मींस इट्स फॉर्चुनेट कि मतलब फंगल इन्फेक्शन होगा. एंड फंगल इन्फेक्शन इज
सच ए क्रोनिक इन्फेक्शन, मतलब बहुत दिन चलता है, उसकी ट्रीटमेंट भी बहुत लॉन्ग है। तो ट्राई करना चाहिए कि मतलब एज मच एज पॉसिबल आपका पेट प्रोटेक्ट रहना चाहिए स्किन की, बिकॉज सी वी कैन नॉट चेंज दैट सीजन, बट वी कैन इंक्रीज इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन। ओके, सीजन कोई भी हो, स्किन की इंटीग्रिटी अगर प्रॉपर रहेगी तो बॉडी का जो आईजीई लेवल है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, जो स्किन का टारगर मेंटेन करते हैं, वो डिसीज होने ही नहीं देंगे। मीन्स you focus life on prevention is better than cure in monsoon season, I would say. Okay, because maggoted wounds and fungal infections are very common. Okay, so give good quality of nutrition, amino acids, and just maintain the skin properly. अंडरस्टूड। एक क्वेश्चन आया था अभी डॉक्टर थोड़ी देर पहले, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर शेडिंग के साथ इचिंग हो रही हो, हाँ, तो वो क्या क्या सिग्निफाई करता है शेडिंग के साथ इचिंग डॉग्स में? सी शेडिंग है, वहां पे इचिंग है एंड स्किन इन्फेक्शन दिख नहीं रहा है, so it's a clear cut indication of food allergy dermatitis, specifically gluten. Okay, it's a gluten allergy or means any protein. Okay, तो sometimes eggs can cause that. गॉट इट। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है डॉक्टर? अगर जैसे आप बोल रहे हैं ग्लूटेन की वजह से ये होता है इचिंग प्लस शेडिंग टुगेदर, सो व्हाट आर द सॉल्यूशंस? whenever ऐसा मतलब कभी भी पेट पेरेंट को ऐसा लगे कि मतलब शेडिंग हो रही है एंड वहां पे स्किन इन्फेक्शन नहीं है, तो मतलब बहुत ही ज्यादा शेडिंग हो रही है एंड स्किन इन्फेक्शन नहीं है एंड थोड़ा इचिंग है, सो ऐसा मैंने देखा है कि बायोटिन डिफिशियंसी में ऐसा होता है। ओके, बायोटिन डिफिशियंसी हो सकती है, या फिर जो आप प्रोटीन सोर्स दे रहे हो वो प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से इचिंग हो रही है। तो आपने पहले प्रोटीन सोर्स चेंज करके देखना चाहिए, मतलब खाने में चेंजेस करके देखने चाहिए। अगर आप चिकन दे रहे हो तो यू ट्राई मटन, ट्राई फिश। if you are giving paneer, then you try soya chunks. Okay, then you just introduce omega 3 means omega fatty acid supplements, means code supplement, good quality code supplement. Got okay, and if you are giving full egg, then you don't give egg, means sometime means you withdraw some foods and add some new foods. अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। आपने अभी मेंशन किया कोड सप्लीमेंट्स के बारे में। बहुत लोग जानना चाहेंगे कि व्हाट आर सम गुड थिंग्स टू लुक फॉर इन अ कोड सप्लीमेंट। क्या देख के कौन से कोड सप्लीमेंट्स अच्छे हैं जो लोग यूज कर सकते हैं? ओके, तो कोड सप्लीमेंट ने फर्स्ट ऑफ ऑल पेट पेरेंट शुड सी कि उसमें ओमेगा 3, 6 एंड 9 ये 3 ओमेगा एसेंशियल अमीनो एसिड्स होने चाहिए। उसमें बायोटीन होना चाहिए, जिंक सल्फेट होना चाहिए, एंड प्लीज कोई दूसरा ऑयल का सोर्स होना चाहिए, मतलब सोयाबीन ऑयल, ओके, और प्लीज विटामिन B12, ओके, देन मीन्स विटामिन सी, ये मतलब एडिशनली कुछ, क्योंकि ओनली ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी एसिड्स अगर उसको सप्लीमेंट में है तो वो बहुत अच्छा कोड सप्लीमेंट बन गया, ऐसा नहीं है। बिकॉज कोड सप्लीमेंट वो इसेंशियल अमीनो एसिड्स को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए भी कुछ बाकी न्यूट्रिएंट्स की हेल्प लगती है। करेक्ट। तो because code supplement is not it's a supplement, it's dietary supplement, okay, it's dietary protein, okay, so you have to see formulation is very important, okay, जैसे कि वी कोट है, वी कोट में ओमेगा 3, 6, 9 है, ओके, देन उसमें सार्डिन फिश ऑयल, which fish oil used, अभी ओमेगा 3, 6, 9, but sardine fish oil consists of omega 7, okay, means that code supplement consists of omega 3, 6, 9 and 7, all omega 3 omega fatty acids, means essential amino acids consist in that code supplement, okay, means which will give you a good result. Got it, got it. बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, lots of questions, so that's good. And your question, how many times should I brush my Labrador's coat? जैसा कि डॉक्टर दिलीप ने पहले बोला, twice a day is a good frequency. Twice a day is enough. Twice a day is usually enough, so you can do it once in the morning, once in the evening. That would definitely help with shedding. Doctor, एक काफी सारे questions हैं, so I'm going to go to and fro a little bit, but एक question
आया था अबाउट डॉग्स गोइंग इनटू हीट एंड इट्स रिलेशनशिप विद शेडिंग. क्या कुछ रिलेशनशिप होता है कि व्हेन डॉग्स गो इनटू हीट शेडिंग बढ़ती है, कम होती है? शेडिंग बढ़ती है, स्किन प्रॉब्लम होने के भी चांसेस होते हैं. हम्म. जब डॉग हीट में जाते हैं, ओके, सो हीट के कुछ फेजेस होते हैं, ओके, मींस इट्स साइकिल. सो उसमें काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एंड वो हार्मोनल चेंजेस में डॉग्स के स्किन पे, मतलब हार्मोन्स आल्सो प्रोटीन, करेक्ट. ओके, तो वो स्किन को डिस्टर्ब कर सकते हैं. हम्म. whenever you are observing, means that is physiological situation, means हम्म. हार्मोन्स उस ब्लड स्ट्रीम में रहेंगे, उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा. जब हम्म. भी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो स्किन पे अफेक्ट होगा ही होगा. सो हम्म. ड्यूरिंग हीट यू कैन ऑब्जर्व a bad type of hair fall, and sometime underlying allergic skin infection भी हो सकते हैं. गॉट इट. सो हीट में शेडिंग बढ़ना इज नॉर्मल, इसमें कुछ आउट ऑफ द Yes. ऑर्डिनरी नहीं. Yes. दिस इज Yes. नॉर्मल तो प्रॉब्लम. whenever heat, हाँ, कभी हीट अगर स्टार्ट हो गए तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स लाइक ओमेगा 3, 6, 7, ये सिर्फ कोट को, मतलब कोट सप्लीमेंट मींस कोट को ही अच्छा, मतलब वो सपोर्ट करते हैं ऐसा नहीं है. ओमेगा 3, 6, 9, ये जो फैटी एसिड्स है, ये मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उनको भी स्ट्रेंथन, मतलब स्ट्रांग बनाने के लिए हेल्प करते हैं. ओके, दे हेल्प्स इन मेनी सिस्टम्स. ओके, ब्रेन डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलपमेंट हो गया, हार्मोनल बैलेंस वो करते हैं. ओके, सो इट हैज मल्टीपल इफेक्ट्स, सो यू हैव टू स्टार्ट दैट. अंडरस्टूड. थैंक यू डॉक्टर. एक कैट्स के बारे में एक और क्वेश्चन आया था अभी. Okay. जो हमने डॉग्स के बारे में डिस्कस किया, शेडिंग और इचिंग कॉम्बिनेशन, उसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि डू कैट्स आल्सो हैव सेम प्रॉब्लम, कैन दे आल्सो सफर फ्रॉम शेडिंग इचिंग एट द सेम टाइम? Yes. 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 एंड Obviously. एंड व्हाट Because implication? the reason is might. Might. Mites. क्या होता है कि माइट का जो स्टार्टिंग है वो कानों से होता है. ओके, एंड इट गोज इन ऑल ओवर बॉडी. ओके, एंड ओवरवेट कैट एंड माल न्यूट्रिशनिस्ट कैट, इसमें ये दो कैट्स में आप डेफिनेटली शेडिंग देखोगे. ओके. इट्स नॉट इस ऑब्जर्वेशन. आई ऑब्जर्व मेनी टाइम, जब माइट इन्फेस्टेशन स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली वहां पे शेडिंग होती है और ज्यादा शेडिंग होती है. उसका डॉक्टर वेट से क्या लिंकेज है, जो आपने बोला अभी ओवरवेट या अंडरवेट कैट्स में ज्यादा दिखता है ये? अंडरवेट कैट्स में कुछ डिफिशियंसीज होती है और ओवरवेट कैट में मतलब मेटाबॉलिज्म काफी अफेक्ट होता है. Okay, so which also affects skin because it is eventually Yes. skin is the biggest organ in the body. तो उसका impact skin पे और itching and उस पे भी आता है. Interesting. In fact, my cat is right now, she had a lot of itching कुछ time पहले, so I changed her diet and उससे काफी फर्क पड़ा उससे. But I did not know the metabolism and this is also interrelated. नॉर्मली देखें तो जैसे डॉग्स के लिए भी, कैट्स के लिए भी, कैट्स तो ऑब्लिगेट कार्निवोर्स होती हैं तो प्रोटीन खाना ही खाना है. डॉग्स भी काफी प्रोटीन खाते हैं. व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन्स आर गुड स्पेसिफिकली स्किन हेल्थ के लिए, शेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन्स आर गुड फॉर डॉग्स एंड कैट्स? Any fresh protein source, means like fresh chicken, fresh mutton, fresh soya, fresh fish. These are good sources. Means fresh sources means with the preservative free. What happens ki I don't want to mistake brand name and all. Okay, but there are two type of foods. Extrusion means the food which is prepared by extrusion technology and food prepared by baking technology. Baking technology is it's self-explanatory. It means as it is वो fresh protein sources, fresh nutrition आपने bake किए हैं and you are offering to your dog. Okay. And another thing, extrusion technology में क्या होता है कि जो raw offals होते हैं, मतलब raw sources होते हैं proteins के, like chicken, mutton, fish. Okay. वो प्रोसेस किए जाते हैं और उनका सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल फैक्टर्स ऐड किए जाते हैं. उसका और सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड किए जाते हैं जो डॉग्स को कभी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो फ्रेश प्रोटीन एंड बेक्ड फूड इज गुड
Fresh and baked. So try and give your pets fresh or baked food. And not any other kinds. Interesting. I'm just going to look at one other question that just came up. And का एक और क्वेश्चन है, डू वी हैव टू कुक द मीट और कैन वी गिव इट रॉ? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने भी काफी बार सोचा है और मेरे साथ काफी भी है इस क्वेश्चन की, व्हिच आई विल शेयर एट सम अदर पॉइंट. बट ये काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कुक करें या फिर रॉ दिया जाए. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? माय ओपिनियन इज मींस कुक करना चाहिए, बिकॉज इन इंडिया जो चिकन मतलब जो स्लॉटर हाउसेस है वहां पे वो टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हुई नहीं है कि जहाँ पे आप 100% क्लेम करोगे कि ये चिकन मटन फिश साल्मोनेला फ्री है, बिकॉज साल्मोनेला इज अ डेंजरस बैक्टीरिया. Got it. Okay, and if it enters in your pet's body, then it will create a bad havoc. Okay, तो वो आपके पेट की तबीयत बहुत और बहुत ही ज्यादा खराब कर सकता है. अच्छा. So it's good कि आप कुक करके दें. And cooking, when you say cooking, what kind of cooking? Light boiling, किस तरह से कुक किया जाए उसको? I think a lot of people would want to know. प्रॉपर बॉइल होना चाहिए, मतलब हाफ बॉइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी भी डाइजेस्टिव सिस्टम सेंसिटिव ही होती है. अगर हाफ बॉइल दिया तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट कर नहीं पाएंगे और सडनली इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ के उनको वोमिटिंग एंड मोशंस होने के चांसेस होते हैं. तो proper boiling is important. Proper boiling of food, of meats is important. So that's something that all of us should note. Raw meat is not good because it has salmon. Raw meat is not good. Possibly can have salmonella, जिसके problem हो सकते हैं. And properly boiled meat, well boiled meat is also good, easy on their digestive system. Correct. Great. Thank you, doctor. Any recommendations on? एक question आया था कि कौन सी इंडियन फिश इज गुड फॉर कोट? आई डोंट नो इफ देयर इज एन आंसर, बट आई विल स्टिल आस्क यू. इंडियन फिशेस के अंदर कौन सी फिशेस होती हैं which are good for which can help coat better skin health and coat health? Basa is good. Basa is good. Yes. Any Basa fish is good. Any fish that is absolutely not good and should be avoided? No. Unless and until it's fermented or it's dirty. Okay, but fish is good. Generally fish is good, and within Indian of course Basa is good, and then there are other fishes like tuna, salmon, sardine, jo ki sardine fish consists of all omega essential amino acids. So but sardine fish has many these bones, small large bones. Okay, so it's difficult to eat. Okay, एंड कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है उनको, मतलब इंटेस्टाइनल रप्चर हो सकता है. तो बासा फिश में प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी अच्छा है, फैट कंटेंट भी अच्छा है, एंड इट्स इजी टू ईट. ओके, मतलब आप प्रॉपर एक मेजर कर सकते हो उसको. राइट. अंडरस्टूड. Thank you, doctor. This is very useful information. एक और बिफोर आई शिफ्ट टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लिख के रखा था, आई थिंक आया था कहीं से, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज फॉर डॉग्स. इज देयर अ कॉन्सेप्ट लाइक एंटी डैंड्रफ शैम्पू? क्या डॉग्स में डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम होती है, और अगर होती है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? यस, डॉग में डैंड्रफ होता है, बट डैंड्रफ का पहले जो इनिशियल कॉज है, बेसिक कॉज रूल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. डैंड्रफ क्यों हुआ? ड्राई स्किन की वजह से वो स्किन का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है डैंड्रफ प्रोड्यूस करना. ओके, तो डैंड्रफ, यस, सो डैंड्रफ अवॉइड करने के लिए आपने उसको इसेंशियल अमीनो एसिड स्टार्ट करने चाहिए, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए. एंड इफ यू वांट टू गिव अ गुड बाथ, देन you should start with green apple and aloe vera gel. Okay, aloe and green apple based shampoos are good. Okay, aloe vera gives soothing and green apple is antibacterial, antifungal, and it's nutritious. Interesting. So basically किसी भी स्किन कंडीशन के लिए what you're saying is nutrition is primary, जिसमें कि omega acids are the ones that are primary, and then for any kind of supplement support, you can give either coat supplements or you can give dandruff anti-dandruff based shampoos, which are, and aloe vera and green apple are usually the good ingredients in shampoos, correct? Yes.
Yes. Super. Sometimes dandruff indicates vitamin D deficiency, so pet parent can add little bit mushroom in the food. Okay. And mushroom is rich source means vitamin D. Oh, so it can resolve the problem. very interesting. I had no idea about this. That mushroom diet में add करने से vitamin D help होता है. Thank you, doctor. Doctor, थोड़ा सा shift करते हैं, and I think a lot of people also have this question कि what breeds usually suffer from higher shedding, more skin problems? Is there a specific breed that has this as chronic problem? Yes, Labrador, Golden Retrievers, Lhasa Apso, and Burmese Mountain Dog, Mastiffs. These dogs which have skin folds. Okay. This happens a lot. Okay. From skin issues, the shedding. Okay, so usually you're saying skin dogs which have folds in their skins usually suffer a lot from skin issues. Yes. And is the same thing applicable also to shedding? मतलब जिनको जो folds वाले जिनके skin होते हैं उनमें shedding भी होता है ज़्यादा? Yes, shedding होता है क्योंकि उनकी skin में ना skin infection बहुत common होता है. Folding की वजह से moisture होता है और fungal infection कभी जाता है. Got it. So again, another important point I think then for all of us is to note that we have to keep the skin as dry as possible. Moisture collect नहीं होना चाहिए के अंदर. The moment moisture buildup happens, there are chances of skin infections and hence hair falls and whatnot. Okay, एक और question आया है मेरे lab को hair fall ज़्यादा होता है. And so what is the possible cause? We've spoken about it, Sky. I can only see your ID, but we've spoken at length about this. So I would urge you that you please, see this live as recorded. We will share it, and you will possibly get all your answers. I also want to talk a little bit about coming back to cats again, doctor. Monsoon mein and cats. Are the same things again applicable in cats cases also? Monsoon mein skin issues, etc. Yes, because cats की skin बहुत ही sensitive होती है. Monsoon season में अगर moist हो गया, because cats को maggoted wounds बहुत commonly होते हैं, बहुत ही easily हो जाते हैं. And cats के wound जल्दी ठीक होते नहीं है, because monsoon में problem ये होता है कि healing थोड़ी delay हो जाती है. Okay, because infection बढ़ता है, infection होने के ज़्यादा chances होते हैं. तो cats को wound होने से बचाना चाहिए. This prevention is best please practice in monsoon season for cats. Got it. Because एक जगह पे wound हो गया तो वो तुरंत फैलता जाता है and पूरी body cover हो जाती है. डॉक्टर एक और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से पूछना चाहूंगा आपसे कि cats usually tend to groom themselves a lot. वो अपनी फर को, अपनी स्किन को बहुत ग्रूम करते हैं और एक दूसरे को भी बहुत ग्रूम करते हैं, राइट? एंड आपने मेंशन पहले कि यूजुअली कैट्स में किसी भी स्किन टाइप में मॉइस्चर इकट्ठा नहीं होना चाहिए, बट व्हेन कैट्स ग्रूम ऑब्वियसली द टंग इज अ लिटिल वेट, so their body gets moist. Is that a problem or is that something natural? And how does that work? It's natural sometime, but sometime it can cause problem. If they vigorously groom themselves, then it can cause problem. Okay, means hairball is a secondary problem. Okay, then fecalith, then means skin can become moist and secondary fungal infection is very common in that case. Understood. So is it safe to say, डॉक्टर, कि कोई भी पेट, कोई भी एनिमल अगर आपको अपने आप को ज्यादा ग्रूम कर रहा है, is that an indication to discourage करना चाहिए? Could be an issue? Yes, it can be an issue. Okay, so उसको discourage करना चाहिए pet parent. Okay, and how can one do that? How can one pet parent discourage a pet from grooming, because it's very difficult. मैं cat parent हूँ, मुझे पता है. Yeah, they have to speak to their pet, because see, sometimes pets are very smart. Okay, they know how to seek attention of pet parent. Okay, so उसके बहुत सारे methods उनके पास होते हैं. मतलब उनका वो एक अलग सा बैठना, चीखना, या फिर मतलब एक barking sound करना. Okay, और ये excessive licking करना, ये भी attention seek का एक psychological problem है उनका. Okay. तो पेट पेरेंट ने अटेंशन देना चाहिए, डेफिनेटली अटेंशन देना चाहिए, उनकी एनर्जी ड्रेन करनी चाहिए, उनको रेस्ट मिलनी चाहिए. सो ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं है. समटाइम दे रिमूव देयर फ्रस्ट्रेशन, ओके, बाय लीकिंग देयर पॉज एंड ऑल. बहुत सारे
इश्यूज वो खुद को ही क्रिएट करके लेते हैं उसमें. वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने कभी नहीं सोचा था कि बिकॉज यू नो एंड आई एम जस्ट अगेन टॉकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस कि बिकॉज माय कैट इज ओवरलिकिंग मींस शी इज पॉसिबली लुकिंग फॉर अटेंशन और सम काइंड ऑफ एनर्जी डिसिपेशन विल रियली हेल्प. आई नेवर कनेक्टेड दीज टू थिंग्स. सो वेरी वेरी हेल्पफुल. एंड आई थिंक सेम थिंग विल अप्लाई टू डॉग्स ऑल्सो कि अगर डॉग्स अपने आप Yes. ज्यादा ग्रूम कर रहे हैं, ज्यादा लिक कर रहे हैं, which means they are seeking some attention which is not being given to them. So that's, thank you doctor, that's very very helpful. Doctor, my next set of questions is essentially around going back to food, because what I have understood from this conversation ki food is the most essential part in Yes. well-being of skin and hair. So my question to you is, what are the complete no foods? What is it that we should never give our pets, dogs and cats, and you can tell us separately, which can create some problems? Yes. This chapati you should never give to the pet, to pets, because it consists of gluten, and gluten is very common. It cause skin allergy. Okay. Onion, garlic, spinach, chocolate. Okay. ये नहीं देनी चाहिए, बिकॉज ओनियन गार्लिक स्पिनच अगर गलती से भी मतलब पेट ने खाया तो उसमें एक मिस थियोब्रोमिन, अभी चॉकलेट में थियोब्रोमिन होता है जिससे किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं. ओके. एंड ओनियन गार्लिक में मिस ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जो क्रोनिक एनीमिया कॉज कर सकते हैं, एंड उसके वजह से आपका पेट बहुत बीमार होने के चांसेस होते हैं. तो ये चीजें कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए. ओके. एंड स्पेसिफिकली ग्लूटेन सोर्सेस एंड रॉ हाइड. ये रॉ हाइड की जो ट्रीट्स है वो भी अच्छे नहीं होते पेट्स के लिए. मींस एकदम सडन उनको मतलब स्किन एलर्जी स्टार्ट होती है. ओके. अगर there is a question, I have a follow up to that, but I'll first take the question that's on the chat. Is boiled packet milk bad for dogs, especially Labradors? के लिए पूछा है आपने question. Boiled packet milk. Yes, it's bad. Okay. Because it consists of lactose. Okay. And to digest lactose or break down that lactose, means they should have, उनके बॉडी में वो लैक्टेज नाम का एंजाइम रहना चाहिए. इट्स अ कैटलिस्ट. सो वो एंजाइम उनके बॉडी में नहीं होता है तो एनीथिंग वो फिर लग्जेटिव एक्शन करता है. मींस इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अगर उनके बॉडी में वो एंजाइम ही नहीं है तो वो मिल्क अगर वो देंगे तो वो लैक्टोज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, लूज मोशंस हो जाएंगे, ब्लोटिंग हो जाएंगे, स्किन एलर्जी भी हो जाएगी. ओके. गॉट इट. सो जो चीज वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, जो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में है ही नहीं है, वो तो उनके लिए टॉक्सिक ही है ना. Correct. So you're basically saying things that include gluten and things that include lactose are usually be avoided because they can't digest. We have a few more questions. Do shed some light on ideal nutritional requirement of a dog and a cat, which should be a part of their diet. So doctor, basically अगर हम एक डॉग लें और पहले डॉग की बात करते हैं, what is the ideal nutrition requirement? किस तरह का खाना, किस तरह, कितना फैट, कितना प्रोटीन, थोड़ा उस बारे में if you can help us understand what are their nutrition? न्यूट्रिशन देखो, न्यूट्रिशन तो बहुत बड़ा टॉपिक है. एक तो मैं इसमें मतलब एक दो 4 मिनट में तो एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा, बट डेफिनेटली एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, प्री एंड प्रीबायोटिक्स एंड सम essential nutrients you should be the part of your pet's diet. And fiber उसमें रहना ही चाहिए. Fiber is also crucial part of the diet. Okay. तो जब पपी स्टेज में है डॉग तो उसको 4 बार फूड देना चाहिए. हाई प्रोटीन वो रहना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट होना चाहिए. जब वो 6 मंथ्स का हो जाएगा तो 6 मंथ्स के बाद यू कैन शिफ्ट दैट मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ द मील्स अप टू 3. ओके. तो वहां पे आप एक प्रोटीन मतलब जो प्रोटीन रिच डाइट है वो मीडियम लेवल पे ला सकते हो. और जब वो एडल्ट बनते हैं तो यू कैन गिव 2 मील्स एंड जस्ट कंट्रोल देयर वेट. मींस पेट्स को जो मतलब ऐसा अपने न्यूट्रिशन देना चाहिए कि मतलब जब वो एडल्ट होते हैं तो फाइबर कंटेंट अच्छा होना चाहिए. Got it. Okay. Means you just give them bulk satisfaction, okay, and kind of energy.
they will maintain their life. Okay, because overweight pet suffers a lot due to arthritis and many problems. Okay, We have that topic lined up in the coming weeks, doctor, especially obesity and how nutrition can help in controlling obesity. yes. Because nutrition is key role, Prashant. Yeah. Okay, because when you are taking a correct nutrition, I'm not speaking about dog, cat, and all species. Okay, nutrition is the key of your health. Correct. Understood. Doctor, दो तीन और interesting questions आए about specific nutrients, and we'll come back to cats' nutritional requirements after that. But is something that people can give their dogs? Is curd a good ingredient? Because आपने बोला milk is not good, and milk में because lactose होता है. But is curd something that is easy to digest for dogs, and is it good for them? Curd, na? Curd. Dahi, correct, curd. Yes. Curd is easy to digest. Okay, because curd में तो lactose नहीं होता है. Correct. Curd consists of probiotics. Okay, so probiotics are good. Probiotics are good. So curd is a good thing, but milk is not. I mean, curd is a good. Yeah, from a layperson standpoint, when you think of milk and associated products, you start to bucket them together. So it's good to have clarity that, not good, but curd is. The other interesting ingredient somebody's asked for is ghee. Ghee jo hota hai, is that good for a dog's health? It's good, but in minimum quantity, means not more than half teaspoon. Okay, and once in two days. Okay, once in 2 days, or miss 2-3 days. Miss you can give twice a week. Okay, but don't give on regular basis. Otherwise, they will put on weight. Oh, okay. So ghee is good, but in very, very limited quantities. But we have a lot of ingredient-driven questions coming, and we'll take them one by one. But ghee का taste dogs को नहीं समझता है. They can smell, but they cannot taste. Okay, they have a very limited taste buds. Okay, so हमें ऐसा लगता है कि मिर्ची खा ली तो उनको तीखा लगेगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. Okay, very few products they can taste. Okay, but they can smell everything. Got it. Yeah, this is a very interesting learning that I have had recently, that all animals, unka jo taste or sensorial is driven by their sense of smell, not as many taste buds. So they have a limited taste, but they have very strong smell. So they need to, that's something that they get attracted to. There are two more questions about ingredients. I'll come back to that. I want to just touch upon quickly cats' ki nutritional requirements, Doctor. Kya hoti hain and how are they different from a dog? कैट्स का जो फूड होता है वो टॉरिन रिच होना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट है, एंड हाई फाइबर डाइट होता है. ओके, बट प्रोटीन एंड टॉरिन ये मींस इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उनके डाइट का, एंड इट कीप्स देम हेल्दी. ओके, एंड डॉग्स में मींस इट डिफरेंट, मींस जो टॉरिन डॉग को भी लगता है, बट कैट्स को कुछ ज्यादा क्वांटिटी में लगता है. And taurine के क्या sources हैं डॉक्टर? कुछ अच्छे sources, because as a cat parent it's important to know क्या देना चाहिए so that they get taurine. See, this commercial pet food is good source. Okay. Yeah. And because the sources which are available in the market, okay, means like some means materials, means ingredients which are present in the food, means daily routine, वो cats खाते नहीं है. Okay, correct. So it's good to stick with means commercial pet food because वो balanced होता है, और cats को कितना taurine लगता है वो भी important होता है. एक hypervitaminous या hyper वो भी एक concept होता है, तो वो नहीं होना चाहिए. I want to clear a personal doubt. क्या taurine is also linked to their eyesight? Yeah. So the eyesight of the cats depends on their taurine intake. कि मैंने कहीं पढ़ा, yes. I'm not sure, so I'm asking you. Yes. No. You're true. Okay. You're exactly right. In dogs and cats, in both, taurine is essential for the eyesight. Vision. Eyesight. Got it. एक और question around cats which is related, so I'll just address that quickly. Can we keep cats only on a vegetarian diet? No, not possible. Not possible. Not possible. That's a very simple. उनका digestive system ही नहीं, but again I'm telling कि it's not good. मतलब see, cats का अगर उनका जो सिस्टम है, मतलब आप
फ्रीज में पत्थर तो नहीं धो सकते हो ना. Got it. So we'll take it as a simple answer, Doc, that cats have to be fed non-vegetarian meal, period. There's no question around it. Let's also quickly talk about a few specific, and I know these questions are coming from, I can relate to all of these questions because I've asked these same questions. कौन से fruits dogs के लिए अच्छे होते हैं, कौन से नहीं होते? If you can name a few common ones. Yeah, skinless apple, okay, watermelon, Hmm. then uh, means you don't give tomato because tomato consists of tomato is again it's reasonable, Hmm. but मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा कि टोमेटो नहीं देना चाहिए जिसमें क्रिस्टल्स होते हैं और क्रोनिक किडनी स्टोन या फिर ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस होते हैं. Okay. Okay. बनाना दे सकते हैं वो कम क्वांटिटी में. Hmm. ओके, देन मैंगो दे सकते हैं. Mm-hmm. Yes, they can give these fruits. Okay, skinless apple, miss watermelon, And some other, cucumber. and some other seasonal fruits, say strawberries, etc. Berry की जो family होती है, is that Yeah, strawberries they can give. Strawberries they can give, but in minimum quantity. minimum quantities? Got it. Because berries also have good antioxidants, I feel, Yeah. which are good for their health. Two Blueberries are good for eye health. eye health के लिए blueberries. Great point. Two very interesting questions that have come. सबके घर में बनता है आइसक्रीम और मूंग दाल. आइसक्रीम और मूंग दाल ये कि नहीं देना चाहिए डॉग्स को. मूंग दाल दे सकते हैं, बट यू हैव टू कीप अ क्लोज आई कि आपका पेट उसको एलर्जिक है क्या. ओके, तो अगर एलर्जिक है तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा. ओके, आइसक्रीम यू कैन गिव वेनिला शुगर फ्री. Vanilla sugar free. But not more than 1 or 2 cup. Understood. Very, very interesting questions coming forward. I really like this. घर में जो पानी का pH level होता है, उससे भी क्या skin problems, shedding, etc. impact होती है? नहीं, pH level से नहीं होती. pH level से नहीं. Actually, generally जो पानी मतलब पानी होता है वो तो हाँ, अगर पानी का pH कम या ज्यादा हो तो उससे उनको इंडाइजेशन हो सकता है. कंटामिनेटेड वाटर से उनको बाकी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. स्किन के ऊपर नहीं. Got it. The other one is but salty water can cause, means अगर उन्होंने बाथ के लिए यूज किया तो हो सकता है. अच्छा, so बात पीने का इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट बात बेटिंग के लिए यूज किया तो that can be a problem if it's more acidic, etc. एक और good question that I have in front of me is allergies that happen in dogs because of floor cleaners, and we touched upon this briefly, doctor, earlier in our chat कि जो normal chemical based floor cleaners available हैं market में, they can possibly cause allergies. So what are the alternatives that one can use? Savlon, anything which consists of herbal, which is safe for the skin. And in chemical, if you're going in chemical, then chlorhexidine based floor cleaners are good. Sorry, what was that? Chlorhexidine. Chlorhexidine. So either herbal based or chlorhexidine based floor cleaners are good for. Yes, good for dog. Got it. Regarding fruits, I have another question from somebody. ये जो आपने fruits mention किए, watermelon, banana, mango, etc., which are good. Are these fruits, can these be given on a daily basis, or should they be limited, controlled in quantity? Yes, they can give on daily basis. Okay. Shomi has asked me a question saying, is homemade yogurt ice cream good for lab? Yes, Doc already touched on it. Yogurt is good. It's got lots of... Yes, yogurt is good. Ice cream is good, but please vanilla sugar free only. Don't give sugar to your dogs. It's never good for them. Super. So Doc, we are almost at the end of our session. Last, just if you had to give 5 tips, monsoons are coming, and if you had to wrap up this session with 5 tips from you that people should be careful about regarding their pets, what would they be? First of all, I will suggest कि first मेरा tip रहेगा कि monsoon season is flowering season. Okay, तो flowering season में pollen grains produce हो जाते हैं, and pollen grains are potent allergens. Okay,
मीन्स इट कैन क्रिएट अ बैड एलर्जिक रिएक्शन ऑन द स्किन। तो जब भी आप को बाहर लेके जा रहे हो तो जो फ्लावर मतलब जो ग्रीन मतलब नए फ्लावर्स आ रहे हैं या फिर नए प्लांट्स मतलब आ रहे हैं उसको मतलब वहां आपके पेट को जाके वो मुंह घुसाते हैं उसमें उसमें जाके मतलब राइट। दे ट्राई टू स्मेल ओके, वो अपने अवॉइड करना चाहिए। देन पेट्स को मॉइस्ट नहीं रखना चाहिए, मॉइस्ट होने नहीं देना चाहिए, स्पेसिफिकली इन पॉज गॉट एंड इन एनल एरिया। बिकॉज कभी भी जो मैगेटेड वुंड्स होते हैं वो एनल एरिया में, पॉज एरिया में एंड इस एरिया में। ओके, जब वो पानी पीते हैं तो ये मॉइस्ट रहता है एरिया एंड उनको स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं। ओके, एंड देन गिव गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ओके, मीन्स उनको रेस्टिंग एनर्जी एंड जो मेटाबॉलिक एनर्जी मेंटेन करने के लिए जो मीन्स हाइपोअलर्जेनिक फूड इज गुड, फ्रेश फूड इज गुड। ओके, and always give code supplement, any code supplement will do. Got it. Okay, and give them proper exercise in this season. Correct. That's because this is only a season where pet can put on weight. Okay, because बाहर बारिश होती है, बाहर लेके नहीं जा सकते, तो उस टाइम पे मतलब काफी सारे मतलब एक फिजिकल बैरियर्स आते हैं, तो उस टाइम पे पेट सफर हो सकते हैं। तो उस मतलब अकॉर्डिंग टू दैट यू मैनेज न्यूट्रिशन एंड according to that you can give give them exercise. Okay, these tips I would like to give. And another thing, जो कान के इन्फेक्शंस होते हैं ये इसी सीजन में ज्यादा होते हैं। ओके, बिकॉज पेट्स कभी भी वाटर के कांटेक्ट में आ सकते हैं इस सीजन में। अगर वो वाटर मतलब इफ दैट मॉइस्चर इंस्टिल इन द ईयर, ओके, तो ओटाइटिस इंटरना मतलब जो ईयर के प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं वो ईयर के प्रॉब्लम फिर खत्म ही नहीं होते, वो बहुत ही लंबे चलते हैं, मतलब 5 6 7 8 मंथ्स, कभी कभी सालों तक चलते हैं। ओके, सो उनके जब भी आप बाहर से आए तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कान को देखना चाहिए, चेक करना चाहिए, अगर वो मॉइस्ट है तो उसको क्लीन करना चाहिए। एंड इफ यू आर गिविंग बाथ टू योर पेट, देन टेक 2 cotton balls, this deep them in oil, means coconut oil, and put them in ear and then give them bath. Because जब इस सीजन में अगर कान के इन्फेक्शन हो गए एंड पॉज में इन्फेक्शन अगर हो गए तो जल्दी ठीक नहीं होते। Amazing. That's a great tip, doctor. So ears and paws are the most sensitive areas, especially when it comes to infections related to monsoon. And just to sum up everything you said, pollen avoid karna hai in all conditions. Yeah. When you go outside. Moisture, as you said, avoid karna hai. Hypoallergenic food, exercise becomes super important, and finally nutrition is the fundamental thing जिसमें चाहे वो infection हो, चाहे skin problem हो, चाहे shedding हो, all that starts from the right kind of food to be given. Yes. And last thing that I think I would take away from this session is, for all the dog parents especially, groom your dogs twice a day, so that hair follicles etc. stay healthy, skin stays healthy. Super. Thank you, doctor. This was very, very informative. I personally learned a lot, and I'm seeing some great messages, people who have learned also. And yes, we will do this session more frequently, guys. We are planning to do this more than once a month, but I won't promise. We will definitely try our best to keep this going on a regular basis. And we have some very exciting topics. If you have any other topics, any other questions that you think you would like us to address and take, please do share, share through our DMs. Or you can join Wiggles Tribe on Facebook and leave your questions there. Dr. Dilip is very active. We are all very active on Wiggles Tribe, always looking out for what pet parents are asking. And we will try and answer them there or do a session like this again. But thank you very much, everyone. A very good night to you, and we'll see you all very, very soon. Good night, doctor. Thank you so much, Prashant. Thank you, everyone, for joining this session and giving me a chance to explore, to discuss many things. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Good night. Bye-bye, everyone.